Hello, a very warm welcome, dear genius brains, to your own English grammar class. And here I am, your friend Aprajita, with the Acknowledged series of Class 2 English Grammar by Amit Publication. So, children, we all are ready to start with a new chapter, and the chapter is chapter number 7. It says about nouns, male and female. We have read about nouns in the previous chapter, nouns, the kinds of nouns. And here, what we'll learn about nouns, male and female. So, here we start with our chapter, masculine and feminine gender. So, what are these masculine and feminine genders? Some naming words are used for males and some are used for females. Okay? There are the naming words means the nouns. Nouns को ही हम naming words बोलते हैं. तो naming words जो males के लिए यूज होता है, कुछ males के लिए यूज होते हैं और कुछ females के लिए यूज किए जाते हैं. Let's see few of them. Males के लिए कौन से naming words होते हैं और females के लिए कौन से होते हैं. Male, boy, man, uncle, father. And for female, girl, woman, aunt, mother. So we use these naming words for males and these naming words for females. Now nouns that are used for males are called masculine gender. जिन nouns को हम males के लिए use करते हैं, उन्हें हम कहते हैं masculine gender. And the nouns that are used for females are called feminine genders. जो noun हम females के लिए use करते हैं, उन्हें हम कहते हैं feminine gender. यहाँ हमने देखा ये है masculine gender, boy, man, uncle and father, and these are feminine genders, girl, woman, aunt and mother. So moving ahead, think and answer. Tick the gender you belong to. अब जो gender आप हैं, उस पे आप tick करेंगे. If you are a male or boy भी male में ही होता है ना, masculine gender होता है boy. If you are a boy, you will tick on male. If you are a girl, you will tick on female. Fine, children? Read the following masculine and feminine genders. अब हम कुछ masculine genders और कुछ feminine genders पढ़ेंगे. Read it with me very carefully. Masculine genders. First, we'll read all the masculine. Boy, brother, father, nephew, man, uncle, husband, gentleman. Now, side by side, now we'll read the feminine gender also. हमने सारे masculine genders पढ़े अभी. अब इनके feminine genders पढ़ेंगे. Boy, girl, brother, sister, father, mother, nephew, niece. So boy is masculine, girl is feminine, brother is masculine, sister is feminine, father masculine, mother feminine, nephew masculine, niece feminine. Now next, man, woman, uncle, aunt, husband, wife, gentleman, lady. Fine children? तो ये है कुछ masculine genders जिनके की feminine genders भी साथ में दिए हुए, masculine and feminine genders. So read it very carefully again. Now there are some more. कुछ और masculine और feminine genders पढ़ते हैं हम. Son का feminine, daughter. King का feminine, queen. Lion, lioness. Tiger, tigress. Horse, mare. Grandfather, grandmother. Prince, princess. Actor, actress. Cock, hen. Sir, madam. तो ये है कुछ masculine genders जिनके हमने feminine genders में जिनको हमने change किया. Okay? Now match these words to make correct pairs. Here some masculine या feminine genders जो भी हैं, यहाँ feminine genders दिए हैं सारे,
और इसको हमें मैस्कुलाइन से, इनके जो मैस्कुलाइन जेंडर्स हैं उनसे हमें मैच करना। सो लेट्स स्टार्ट। मदर, फादर, मदर का मैस्कुलाइन जेंडर हुआ फादर। अब सिस्टर, सिस्टर का मैस्कुलाइन क्या होगा? ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर। ओके। डॉटर, डॉटर, सन, daughter, son. Okay. Grandmother, grandmother, grandfather, grandmother, grandfather. Aunt, aunt का क्या होता है? Uncle होता है ना? Aunt, uncle. Lioness, lioness, feminine gender. Masculine gender is lion. So we have matched the feminine genders with the masculine genders, their masculine genders. Now we move ahead. Now next two genders are common and neuter gender. पहले हमने पढ़ा masculine और feminine gender, अब हम पढ़ेंगे common and neuter gender. Some naming words are used for both males and females. कुछ naming words, कुछ nouns ऐसे हैं जिनको कि हम males और females दोनों के लिए वो एक ही यूज होता है, वो एक ही तरह का noun यूज होता है. देखते हैं कौन से हैं वो. Teacher, doctor, student. Fine. अब teacher मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है. और स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. फाइन. सो दोनों के लिए हम एक ही तरह का नेमिंग वर्ड यूज कर रहे हैं. द नेमिंग वर्ड्स टीचर, डॉक्टर एंड स्टूडेंट कैन बी शेयर्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल. दोनों मेल या फीमेल के लिए एक ही नेमिंग वर्ड यूज होता है. These are common genders. Common, दोनों के लिए कॉमन एक नाउन यूज हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं common gender. Nouns that can be used for both male and female are called common genders. Understood children? अच्छे से समझ में आ गया कि जो नेमिंग वर्ड, जो नाउन मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही तरह का नाउन यूज करते हैं वो कहलाते हैं कॉमन जेंडर्स. नाउ नेक्स्ट इज, नाउ लुक एट दिस, लुक एट दीज. देयर आर सम पिक्चर्स गिवन. अब इन पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे. टेबल, साइकिल, ट्री, हाउस. All the words given above are the names of non-living things or objects. ये क्या है? टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग. इट्स नॉट लाइव, इट्स नॉट अलाइव, नॉन लिविंग थिंग. साइकिल, साइकिल इज आल्सो नॉन लिविंग. ट्री, नॉन लिविंग. हाउस, नॉन लिविंग. फाइन. सो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑल द वर्ड्स गिवन अबव आर द नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स. दीज आर न्यूटर जेंडर्स. जो भी नेमिंग वर्ड नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है वो होता है neuter gender. Fine. Nouns that can be used for non-living things or objects are called neuter gender. जिनमें लाइफ नहीं होती उसे कहते हैं non-living thing. Things which do not have life in them are non-living things. And the noun which we use for these non-living things are known as neuter gender. So let's see what else is there. Read the list of the words. Now we'll do some exercises. Read the list of the words. Write C for common and N for neuter gender against each. C, जो common genders हैं उनके लिए हम क्या लिखेंगे? C. उनके आगे हम लिखेंगे C. और जो neuter gender हैं उनके आगे हम लिखेंगे N. Fine. अभी एक बार रिकॉल कर लीजिए कॉमन जेंडर क्या होता है. जो नाउन, द नाउन विच इज यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों मेल या फीमेल के लिए एक ही नाउन यूज होता है, उसे कहते हैं कॉमन जेंडर. और जो नाउन नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है उसे कहते हैं न्यूटर जेंडर. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज. प्लेयर. नाउ प्लेयर कैन बी मेल आल्सो, फीमेल आल्सो. सो दिस इज व्हिच टाइप ऑफ जेंडर? दिस इज अ कॉमन जेंडर. वी विल राइट सी हियर. Singer. Singer can again be male or female. दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये भी common gender है. Chocolate. Now chocolate is an object. It's a non-living thing.
Chocolate is a non-living thing. So it's a neuter gender. N. Pen. Pen again is a non-living thing. It's a neuter gender. N. Child. Child मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है. तो बॉय गर्ल्स जब एक साथ रूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, हम क्या बोलते हैं? Children are sitting there. Okay? Here the child is crying. So it's used for both boy or girl. So this is a common gender. C. Glass. Glass is a non-living object. So it's a neuter gender. N. Fine? Next is, in these sentences, change the masculine nouns to their feminine forms and vice versa. जो masculine nouns हैं उनको हमें feminine में change करना है, और जो feminine nouns हैं उन्हें हमें masculine में change करना है. ठीक है? The lion escaped from the zoo. अब इसमें lion जो है noun कौन से फॉर्म में है, कौन सा जेंडर है? Lion is a masculine gender. तो हमें लायन का क्या कर देना है? इसे फेमिनाइन में चेंज करेंगे. क्या हो जाएगा? The lioness escaped from the zoo. I'm not going to write the whole sentence. मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगी. आपको अपनी नोटबुक में पूरा सेंटेंस लिखना है जेंडर चेंज करने के बाद. I'll just change the gender. मैं यहाँ आपको जेंडर चेंज करके बताऊंगी. The lion की जगह आप क्या लिखेंगे? The lioness. Lioness. The lioness escaped from the zoo. बाकी पूरा वैसे ही. The girl went for a stroll with her father. अब देखिए यहाँ दो genders हैं. The girl, दो nouns हैं, girl and father. Girl is feminine gender, father is masculine gender. अब girl को हमें feminine को masculine में change करना है. Girl का क्या हो जाएगा? Boy. And father का क्या हो जाएगा? Mother. Okay, children? We change both the genders here. So now the sentence. अब जो आप sentence लिखेंगे वो क्या होगा? The boy went for a stroll with her. With her नहीं आएगा. अब ये her की जगह his हो जाएगा. With his mother. Okay? The boy went for a stroll with his mother. Next is, the boys were in the field. Boys, masculine gender. Boys का feminine क्या होगा? Girls. अब sentence क्या बनेगा? The girls were in the field. The cow was grazing in the field. Cow. Cow is a feminine gender. इसका masculine क्या होता है? Cow का हो जाता है bull. The bull was grazing in the field. My mother and I went shopping together. My mother and I. Mother. Mother is the feminine gender. इसका masculine gender क्या होगा? Father. My father. Here we will change to father. Now, अब क्या sentence लिखेंगे आप? My father and I went shopping together. My uncle always gets me sweets. Now, uncle. Uncle is which type of gender? Uncle is a masculine gender. So we change it into feminine. Uncle का क्या हो जाता है? Aunt. A-U-N-T. Aunt. Now make the sentence. My aunt always gets me sweets. My father asked my brother to go to the market. Father and brother. So we have to change both. Father is also masculine gender and brother is also a masculine gender. इन दोनों को हमें feminine में change करना है. Father का क्या हो जाएगा? Mother. We change into feminine gender mother. Father का हो गया mother and brother का क्या हो जाएगा? Sister. Brother का हो जाएगा sister. Now write the sentence. The correct sentence will be, my mother and asked my sister to go to the market. The last one is, my grandmother gave me a chocolate. My grandmother gave me a chocolate. So grandmother का क्या हो गया? इसको अगर हमने change किया तो grandfather. Grandmother will change to grandfather because grandmother is feminine gender and the masculine of grandmother is grandfather. Now the sentence will be, my grandfather gave me a chocolate.
Okay, children? So, in this way, we change the genders. Now, here was about, this chapter was about nouns and what you learned from the nouns, this chapter, the genders, the genders. And what were the genders? The masculine gender, the feminine gender, the common gender, and the neuter gender. Okay, children, I hope you have understood very well, and to understand it more nicely, what you have to do, क्या करना है आपको अच्छे से और अच्छे से जिससे समझ में आ जाए, आपको एक फिर से इस चैप्टर को रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, इसकी एक्सरसाइजेस दोबारा से करनी है, so you will understand the chapter very well. So we end the chapter here. Stay excited, and I'll be back with a new lesson, new chapter, something new for you. Till then, bye.